So Zorko क्या करती है? They are a franchise. They basically are a tier 2, tier 3 market में, मतलब जो थोड़ा सा the places where the McDonald's and these things are not there, वहां पे ये लोग QSRs, quick service restaurants खोल रहे हैं. And their model is a franchisee business. इन्होंने 17 महीने में 150 franchises बेच दी हैं अपनी. They are doing around 30 CR के आसपास का revenue right now. I saw their pitch. काफी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है, बिकॉज आई थिंक व्हाट दे क्लेम टू डू इज, ये बोल रहे हैं कि यार हमारा, आप अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपका सेटअप कॉस्ट काफी कम होगा और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे भी ज्यादा कम होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर एसओपीज वी प्रोवाइड यू विद ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड ऑल. आपका जो मैन पावर लगता है कोई भी रेस्टोरेंट चलाने में, यू विल नॉट रिक्वायर मोर देन 2 people टू रन योर ओवरऑल स्पेस, एंड देन विल ऑल्सो हेल्प यू ड्राइव ट्रैफिक एंड एवरीथिंग. इनका जो, आई थिंक अमन एंड रितेश वर बोथ इंटरेस्टेड in putting the money in, but last moment में उन्होंने हाथ खींच लिए because the founders were saying कि यार uh, मैं पैसे की जगह आई वुड वांट योर कमिटमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम अमन गुप्ता एंड रितेश. दे सेड कि यार सर 20 घंटे मेरे को साल के 20 घंटे दे देना आप अपने. एंड अमन बेसिकली रिफ्यूज टू गिव अ कमिटमेंट ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट ही वाज गोइंग टू गो इन, अदरवाइज probably they would have gotten funded. क्या मतलब, what is your take, Mridul, Bharat, anybody? Hi Akash, you also joined in finally. क्या लगता है, what is your take on this company? कुछ मतलब, सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम जो इन लोगों ने, ऑल द फाउंडर्स हैड पॉइंटेड आउट, वाज दैट कि यार आपको अपने धंधे के ऊपर तो फोकस है, बट आपका जो ओवरऑल ब्रेकअप है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट योर franchisees are making, 50% of them are profitable, but the next 50% are either breaking even or are at losses. But the founders of Zorko's focus is still on profitability and growth. तो ये अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स के बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं. So that is one bit which they had, but these people are growing fairly rapidly. Sandhya, Mridul, Akash, anybody of you have any comments on this one, or we'll probably move on to the next one? Yeah, I Sandhya. think I agree with you on this. I did see the pitch, and they were very aggressive in terms of opening the franchises rather than focusing on it. So it was more like quantity over quality. But I think on a macro level, they were definitely doing good. They were doing amazing revenue. But yes, as you mentioned towards the end, I think they didn't need funds वही as much they प्रमोशंस के लिए आए needed थे, मुझे लग रहा है. the mentorship, yeah, हम्म. and their expertise, because they came from a very small city, so maybe they did not have access to enough mentorship and हम्म. guidance. So yeah, so then they were more bullish about their time rather than funds, and hence they couldn't crack the deal. But I think overall they could have otherwise. And maybe if we look from their position, maybe they did have funds and they just needed their time, and they were okay to barter with it and to maybe Yeah. go let the deal go away if they don't have the time in hand. So yeah, but overall I think they're doing well on a macro level. But yeah, on a more granular level, they need to focus on their specific franchises too. या नहीं नहीं, एब्सोल्युटली यार, आई थिंक वही है इनका. ये जहां से आते हैं वहां पे दे ऑल्सो वांटेड टू सी कि यार रमन गुप्ता धंधा करता कैसे है. आई थिंक दैट मेंटरशिप फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पीपल ना, कि अगर कोई कमिट करता है 20 घंटा, वो एक्चुअली में इनवैल्यूएबल है. तो मैं तो ये मानता हूँ कि यार ये बंदे दोनों बहुत स्मार्ट है. बोथ ऑफ दीज गाइज आर वेरी Yeah, स्मार्ट. बोथ ऑफ दीज गाइज आर रियली, दे न्यू व्हाट दे वांटेड. ठीक है, उनका ऐसा नहीं था कि यार correct. पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि सर मेरे को इतना पैसा चाहिए. उनका ये था कि यार लेट्स सी व्हाट वैल्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर. आकाश, यू हैव समथिंग टू से? Yeah, yeah. So I think the field what they have, like what they are in, right? This field is actually like extremely good. Actually, if you see in US, right? I'm not like sure of the exact number, but as per my, like as per what I remember, I think one third of the food actually comes from like from the same domain, which is basically हम्म. QSR, right? In हम्म. US. But in India, हम्म. the numbers are fairly very low, which is around 3 हम्म. 4%. So what हम्म. like when I read a lot of reports, right, what I see that this number
is basically bound to grow. So in हम्म terms of the field, what they have basically picked, right? So the CAGR growth would be like extremely fast. I think the problem in India is, of course, that the customers here are slightly price conscious. That is the first thing, and the second thing is also the taste. I mean, like as long as you have basically good taste, right? Then the person हम्म might actually come back to you as long as the pricing is also making sense. So in हम्म, terms of the domain, I think that's I mean, it's a very like fast growing thing. ये तो है यार। मैं तो मैं मानता हूँ अगर आप ढंग से एक फ्रेंचाइजी का आपने मॉडल क्रैक कर लिया तो उसको स्केल करना बहुत आसान है। मतलब ब्रांड Right, ढंग का right, अगर right. बन गया आपका, आपने अपना नीश फिगर आउट कर लिया। Hmm. प्रॉब्लम वही होती है शुरुआती 0 to 1 जर्नी में। फॉर एनी फ्रेंचाइजी दिक्कत वहीं पे आती है आपकी कि आपका ना वो पहला पहला फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल करना, और वो सीक्रेट सॉस जो बोलता है ना, कि आपका आपका बेसिक मॉडल क्या है जिसके बेसिस पे आपका धंधा आ रहा है। अगर आपने वो क्रैक मार लिया तो फिर चीजें बहुत आसानी से मूव होती हैं।